हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लासेस। आज हम 10th क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन इज़ गोइंग ऑन उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज़ दैट? जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम, न्यू पैटर्न एग्ज़ाम 2025. On these MCQ types are there and others questions, short answer, and okay, after that long answer question, 2 marks, 3 marks. Okay, you know that pattern. According to that chapter wise important we are doing today continuous on this session, lecture number 10. 9 lectures have been done chapter wise, chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6 over, and today again chapter 7, just day before one day also in the 9th lecture also 7th chapter has been done. So some questions left, important question related to 7th chapter, so that's why I want to say to you on the 7th chapter. This question 1 is determine if the points 1,5, 2,3 and -2, -11 are collinear. So collinearity, you know, collinearity of 3 points. This, if A, B, C 3 points, collinearity condition is if sum of the two side is equal to third, means AB plus BC is equal to AC. Sum of the two distance is equal to third if distance, then these 3 points are collinear. Okay, so accordingly this we have to solve this application question. Now find distance from 1,5 to 2,3. So let this point A, let this point B, and let this point C, these 3 points. Now solution, distance formula using, so distance AB we have to find. Okay, now distance AB, distance formula you know, square root, whole square root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square between the 2 points A x1 y1 and B y x2 y2. Okay, so x2 minus x1, so means 2 minus 1 is 1, 1 whole square. Okay, 1 whole square is 1, directly I done, plus after that 3 minus 5, y2 minus y1, 3 minus 5 minus 2 whole square 4. I solved whole square also in subtraction and it is root 5. Simplest form is root 5 unit. This is the distance. Now similarly we find BC, second and third point, distance between the B and C, same formula, distance formula. Then x2 is minus 2 minus 2 minus 2, so minus 2 minus 2 minus 4 whole square 16. Okay, plus now y2 minus y1, so minus 11 minus 3 minus 14 whole square 14 जा 14 जा, हाँ जी, 200 216, 14 1 जा 14 4 जा 56, 5 carry 14 1 जा 14 plus 5 19, 196, 14 जा 196. Then simplify, square root of, add both, 6 plus 6 12, carry 1, 10 1 11,
112, 212. Okay, now if simplify this, it is 4 into 4 5 are 20, 4 3 are 12. Okay, this, then we can write this, root 4 is 2 and 53 is prime number, so 2 root 53. This. Now AC also we find first and the third point. Similarly, same formula, A and C, तो -2 -1 whole square, तो -3 whole square, then 9 plus, then -11 -5 -16 whole square, 16 is 256. Now simplify, add 9 6 15, carry 1, 5 1 6, 265. Okay, then 2 से सिंप्लीफाई किया 5 से, 5 इंटू फैक्टर बनाए, 5 5 जा 25 एंड 1 15, 5 3 जा 15, 5 into 53, then we can't simplify, this is root, same, root 5 into root 53. So if you see here, it is root 5, it is root 53, here we can say root 5 into root 53. So if we add any two, we can't add because these are not like, okay, we can't add. So you will see here these not equal, so we have to say okay, as AB plus BC is not equal, AC इसके इक्वल नहीं है, so this implies required points are not collinear. तो points are not collinear. Points are not collinear. Okay बेटा, are not collinear. We have to write the answer. This is done. So like this, next, yes beta, next question is, check whether 5 minus 2, 6 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. तो isosceles triangle definition you know कि sum of, you know कि any two sides are equal in a triangle, then that triangle is isosceles triangle. Okay, clear? Two sides equal. So now distance formula, distance we can find between that all 3 points to 2 point distance, all 3 sides. Then we can check if 2 sides are equal, then it will be isosceles. Now distance, let this A point, let this is B, let this is C. So okay, so AB using distance formula. Okay, distance formula this. Now x2 minus x1, 6 minus 5 is 1, 1 whole square is 1, plus y2 minus y1, 4 minus 2, so 4 plus 2, 6, 6 square 36. Be careful. Okay, then it is square root 37. Now after that BC distance you can find
BC distance is again distance formula. B and C 2 points are there now. So x2 is 7, 7 minus 6 whole square, then 1 whole square 1 plus, now y2 minus 2 and y1 is 4. So minus 2 minus 4 minus 6 whole square 36. Then this is also रूट 37. टू साइड्स इक्वल आ गई, थर्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है. अगर निकालनी भी है तो वी कैन सॉल्व, अदरवाइज इन वन मार्क्स क्वेश्चन नो नीड. ओके, डायरेक्ट यू कैन राइट बिकॉज दीज टू इक्वल्स, सो वी कैन से दिस इज आइसोलेट. बट इफ यू वांट थर्ड साइड आल्सो देन ए एंड सी, तो 7 माइनस 5 होल स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 प्लस then minus 2 minus minus plus 2 0, minus 2 minus minus plus 2 0 whole square 0, then it is root 4 means 2. So this implies two sides are equal. Which two sides are equal? AB equal to BC. So triangle is isosceles. ठीक है बेटा, ISOSCELES, isosceles. Triangle is isosceles. Done. Okay, done. Now similarly next question we can, yes, next question 3. Question 3, name the type of the quadrilateral formed by the following points. Quadrilateral, type of quadrilateral. How many types of quadrilateral? You know, family of the quadrilateral, you know, four-sided closed figure. Name standard figure in the quadrilateral, types of quadrilateral: square, rectangle, parallelogram, rhombus, and after that trapezium. So now here in the coordinate system, how can tell if vertice is given, 4 vertices given of the closed figure? So then here use the distance formula, okay, to say any types of quadrilateral. What is that? You will see now. If this first part 4, 5, 7, 6, 4, 3, 1, 2, these are 4 points. Let us suppose A, B, C. In the same order I am taking A, B, C, D. Okay. So now you can find AD distance formula. All 4 sides you can find. AB, sorry, चलो AD भी find कर लो. पहले AD लिख लिया मैंने, तो कोई बात नहीं. A and D. ओके, तो x2 माइनस x1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 होल स्क्वायर 9. ठीक है बेटा, प्लस AD, तो y2 माइनस y1 2 माइनस 5 माइनस 3 होल स्क्वायर 9. तो 9 प्लस 9 18. ओके, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, देन 3 root 2. 18 means 3 root 2. You know. After that find AB also. AB. AB, first second point. 7 minus 4 whole square. So 7 minus 4, 3 whole square 9 plus 6 minus 5 whole square, then 1 whole square 1, then root 10. It is root 10. Now BC we can find. Now BC is equal to second and third point. 4 minus 7 whole square, 4 minus 7 minus 3 whole square 9 plus
3 minus 6 whole square, 3 minus 6 means minus 3 whole square 9, 9 plus 9 18, 18 means 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 3√2 फैक्टर से डन। तो देखो ये और ये इक्वल हो गई, दी टू साइड्स इक्वल, ठीक है। एंड देन ए बी बी सी ए डी आपका कौन सी रह गई, ए बी बी सी सी डी रह गई, सी डी वी कैन फाइंड थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट दिस। तो 1 minus 4 whole square, 1 minus 4 means minus 3 whole square 9 plus 2 minus 3 whole square, the 2 minus 3 minus 1 whole square is 1, then √10। तो देखो यहाँ पर पोजीशन क्या बनी, दिस ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी अपोजिट साइड आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या पोजीशन बनी कि ए बी इक्वल टू सी डी अपोजिट साइड इक्वल टू √10, दिस implies and AD and CD, AD equal to opposite side A B B C C D AD, AB sorry AB and CD equal, ठीक है, AD and BC sorry AD equal to BC, अपोजिट साइड है, ठीक है। AD एंड BC इक्वल 3√2। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ, अपोजिट साइड इक्वल हैं। अब हमें देखना है अपोजिट साइड इक्वल है, ध्यान दें। तो इसमें ये पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है, ऑल 4 साइड्स इक्वल नहीं है, तो इट इज़ नॉट स्क्वायर एंड इट इज़ नॉट रोम्बस। तो ओनली 2 ऑप्शंस, 2 टाइप्स रह गए, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल आई है। तो इसके लिए एक डायगोनल देखना है हमें। नाउ वी हैव टू चेक द डायगोनल, ठीक है बेटा। टू फाइनलाइज डायगोनल, डायगोनल्स मीन्स ए सी फाइंड करना है, opposite vertices AC and BD, diagonals, if diagonals also equal then rectangle, if diagonals not equal then parallelogram, because in a rectangle diagonals length are equal, okay, so it will be rectangle if these both will be equal. Now AC first and the third point, तो 4 minus 4 0, 0 whole square 0 plus 3 minus 5 whole square यानी minus 2 whole square then 4, then square root 4, it is 2 unit. Now BD we have to check BD, B and D second and fourth point. तो 1 minus 7 whole square minus 6 whole square 36 plus 1 minus 7 whole square minus 6 whole square 6 6 जा 36 and 2 minus 6 minus 4 whole square 16. तो this is root 6 plus 6 12, carry 1 3 1 4 1 5 52, okay, 2 root 13. तो these are not equal, this is 2 root 13, तो not equal. We have to say AC diagonal not equal to BD. This implies hence it is not rectangle. Hence ABCD. Hence ABCD is rhombus. नहीं sorry, it is parallelogram. It is not rectangle. It is parallelogram. Okay beta, opposite sides of parallelograms are equal and
diagonals not equal, all four opposite sides equal and diagonal not equal, then it is parallelogram. Done. If diagonal be equal, then rectangle. Okay, like this you can do. Now if all four sides are equal, then all four sides if equal, all four length, then या तो वो रेक्टेंगल या तो वो स्क्वायर है जब चारों साइड इक्वल हैं, या फिर वो रोम्बस है. तो उसके लिए वही देखना डायगोनल. इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, देन स्क्वायर फिगर. इफ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, देन रोम्बस. ठीक है, स्क्वायर एंड रोम्बस. डन. तो लाइक दिस यू कैन डू सेकेंड पार्ट. ओके, तो दैट एग्जाम्पल given to you. Next question we can do. Okay. Yes, next question is question 4. If A point -2, 5, B point -1, -3 and C point 2, 6 and D point A, B are the vertices of a parallelogram. Of a parallelogram. यानी ABCD is a parallelogram given. Then find the vertex value of A and B. यानी फोर्थ वर्टेक्स D फाइंड करो. किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है. ओके, तो हाउ कैन डू लाइक दिस. इफ पैरेललोग्राम गिवन, तो बी नाउ सॉल्यूशन. व्हाट इज द कंडीशन इन द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. सॉल्यूशन डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम में कंडीशन यूज करनी. डायगोनल of a parallelogram, we know this. ठीक है, कंडीशन पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. We know this. Bisects each other. Bisects each other at a point. At a point. ठीक है, we know because. सो अब ए बी सी डी डायगोनल दिया ना यहाँ पर. ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. इट इज़ गिवन कि ये पैरेललोग्राम है. ठीक है, गिवन. इफ इट इज़ गिवन, देन वी कैन यूज द कंडीशन दिस. ओके, सो क्या होना चाहिए डायगोनल. ए बी सी डी इन द ऑर्डर. तो ए सी डायगोनल मिड पॉइंट. ओके, ए सी मिड पॉइंट. ठीक है बेटा, मिड पॉइंट. ओके, डायगोनल ए सी का मिड पॉइंट. Let it is O and midpoint formula x1 plus x2 divide by 2, x coordinate and y coordinate, y1 plus y2 divide by 2. Now AC ठीक है बेटा. तो x1 x2 -2 -1 डिवाइड बाई 2. तो देन -3 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 ए सी ए बी सी. ओके, ए सी वी हैव टू टेक, नॉट ए बी. ए सी दिस. तो ये हो गया बेटा 2 and -2 then 0 divide by 2 then 0. तो 6 and 5, 6 plus 5 11.
11/2. This is the point O, midpoint. Okay. And diagonal कौन सा? AC, then BD. BD diagonal. Midpoint, इसका midpoint, what is the midpoint of diagonal BD? तो उसका भी वही होगा point, same point, because we know bisect each other at a point, तो वो भी वही होगा. ठीक है. तो along the BD, B and D, okay. तो B x1 x2, तो -1 plus a डिवाइड बाई 2, -1 and plus a यानी a -1 डिवाइड बाई 2, कोमा, देन BD -3 plus b यानी b -3 डिवाइड बाई 2. This. तो from first and second equating both point according to question condition each other these. तो same point equating point 0, 11/2 equal to a -1/2, b -3/2. Equating तो मीन्स x कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, सेम पॉइंट है. तो a -1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0. तो a -1 is equal to 2 into 0, 0, then a is equal to 1. a equal to 1. Similarly y कोऑर्डिनेट इक्वेट किया तो b -3 इक्वल टू this 11/2. 11/2. तो this implies 2 से मल्टीप्लाई 2b -6 इक्वल टू 11. 2b -6 is equal to 11. Clear? 2 से मल्टीप्लाई, then b equal to 11 plus 6, 17/2. So this implies b is equal to 11 and plus 6, then 17/2. तो कोऑर्डिनेट ऑफ द रिक्वायर्ड पॉइंट D, तो क्या आंसर होगा? D इज a, b. तो वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड वैल्यू ऑफ b इज 17/2. तो 1, 17/2. This answer done. So like this we can find the fourth vertex. Important questions. Okay. Now next question 1. Yes, next question. Find the values of y. Y is unknown here, for which the distance between the points P and Q is 10 unit. यानी distance between P and Q means PQ distance is equal to 10 unit given. Okay, this is given. Now use the distance formula. ठीक है बेटा. Distance between 2 points PQ, 10 minus 2, 8, 8 whole square, 64. Okay, 8 whole square 64. Then whole square कर दो both side. Distance square and 10 square 100. तो then distance square means square root. फिनिश हो गया. Then x2 minus x1 whole square 64
y2 minus y1 whole square, then y plus 3 whole square. तो y square plus 3 means 3 3 जा 9, 3 square 9 and plus 2ab, 2 3 जा 6y is equal to 10 square 100. Simple question. Okay, squaring both side distance formula use करके. Then y square plus 6y and 64 plus 9 ऐड किया 73, 73 minus 100, 73 minus 100 तो 60, 73 means 37 माइनस नो 73 का मतलब हो गया 27, 100 माइनस 73 27 37 ओके इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई किया, ठीक है. देन मिडल टर्म स्प्लिटिंग. ओके 9 3 जा 27, फैक्टराइज इट. ओके प्लस 9 एंड माइनस 3 इज प्लस 6. देन मिडल टर्म स्प्लिटिंग प्लस 9y माइनस 3, 9 3 जा 27 माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0. फैक्टराइज एंड सिंप्लीफाई, ठीक है. नाउ नेक्स्ट कॉमन, y कॉमन, देन y प्लस 3 और y प्लस 9 सॉरी ओनली y कॉमन, देन माइनस 3 कॉमन, देन पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव माइनस कॉमन तो साइन चेंज, तो 3 9 जा 27 is equal to 0. Then one factor is y plus 9 and other factor is y minus 3. Okay beta, these two factors product is 0, then each one equal to 0. तो y equal to minus 9 यहाँ से बन गया, ठीक है. एंड यहाँ से y इक्वल टू 3 उधर जाके 0 की साइड. डन. तो y की कितनी वैल्यू आई? 2 वैल्यू. ओके तो वैल्यूज आस्किंग आल्सो, तो आंसर वैल्यूज ऑफ y 3 एंड माइनस 9. ओके बेटा. नाउ वन क्वेश्चन मोर वी कैन डू. ओके बेटा. नाउ you like, share and subscribe the channel and send the video to the other contact and guide them. They must watch, like, share and subscribe the channel and send the feedback in the comment box. Thank you.